Bhojpuri superstar Ravi Kishan, Member of Parliament, joins us. We had Manoj Tiwari sing a beautiful song for us. And I want to talk about politics, but I'm also wondering, आप क्या गुनगुना रहे हो किशन साहब? क्या गाना है आपकी जुबान पर? कौन से वो शब्द हैं आपके होठों पर जो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं? Nothing, Rahulji. I'm very happy that Purvanchaliya, all the my people, my community, our community has voted for Pradhan Mantri Modi ji, believed in him, और फाइनली जितना कहा कि जिंदगी झंड व आज इन लोगन के आपका, और अब उन लोगन के शीश महल वाला के कोनो बात के घमंड ना रही. तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से. वेरी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट. फाइनली कैपिटल रहेगा राहुल जी. एंड जो नर्क हमने 56 कॉन्स्टिट्यूएंसी में ट्रैवल किया, सारी झुग्गी झोपड़ियों में, हर क्लस्टर में, हर पूर्वांचलियों के पास आई वेंट. पार्टी ने जहां जहां भेजा और यही एक आवाज थी, जैसी उनकी जिंदगी थी बहुत बदतर थी, उससे आज आजादी मिलेगी. थैंक गॉड. जो रुझान बहुत अद्भुत आ रहे हैं, यही रुझान आगे और बने, विच आई एम एक्सपेक्टिंग वी माइट टच 50. तो मुझे वो लग रहा है कि एक अच्छी जिंदगी की ओर ये कैपिटल जाएगा, ये राजधानी जाएगी. 27 साल बाद मोदी की गारंटी because Ravi Kishan ji, they backed the Aam Aadmi Party in the last couple of elections. Why do you think voters from the eastern parts of India, northeast India, the eastern parts of North India switched this time to the Bharatiya Janata Party? Because they've been betrayed, they've been cheated, fraudster हुआ है उनके साथ. उनके बच्चों को you serving them booze, एक बोतल पर एक फ्री, वो ड्रंकर्ड बना गए. वो बेचारे काम करने, they've come मायके के हम कमाए जाता नहीं हम दिल्ली. And here you are giving them what service, what life you're giving? No water, pollution, no drinking water, no school. Everything was lies and lies. They've been cheated. फर्स्ट 200 यूनिट बिजली पर बस में फ्री घुमा देंगे. तो लेडीज, this two things, they're poor people because they're very innocent community and they got carried away. And finally जब हम लोग पहुंचे, उनको बताया कि कौन सी नर्क की जिंदगी में जी रहे हो, ये 200 यूनिट के चक्कर में और ये बस के, एटलीस्ट यू नो वेक अप गाइस, अदरवाइज ऑल योर लाइफ विल बी फिनिश्ड. आप बार बार कह रहे हैं, आप झुग्गी झोपड़ी गए, लोगों से, पूर्वांचलियों से बात की. यू सेड this was you went where the party called you. We just want to understand, is it true that a lot of your MPs, MLAs from Bihar, from UP were given specific areas to target? और ये कब से हो रहा था? पिछले 1 महीने से, 3 महीने से, 3 हफ्तों से? No, this is very long. See, Pradhan Mantri, Prime Minister Modi ji and Bhajpa Sangathan plans very, very early. मतलब yesterday only you could see that Prime Minister met all the NDA Gathbandhan for Bihar, and वो भाजपा 12 महीना काम करती. We worked 12 months. This been ये तो चल ही रहा था 5 साल से. We were planning कि दिल्ली का next election. I started last month and I went very crazy 15 days back, and 5 सभाएं 6 सभाएं दिन में करता था. मैं रात तक आता था और मैं 250-300 kilometers I used to travel every day by road. When Delhi traffic, and reaching there and reaching inside where no one can reach, वहां तक जाता था and talk to them, have conversation and then come back and then travel. ऐसे रोज करता था. ये बहुत सीरियस हो रहा है रवि किशन जी. अगर अरविंद केजरीवाल अभी आपको देख रहे हैं तो अपने भोजपुरी अंदाज में कुछ बताइए कि क्या डायलॉग होगा. बहुत सीरियस हो रहा है राहुल जी. तकरार छिड़ल बा तो तकरार चली, यही चला. दिस ऑल वर्ड्स, यू नो, यू शुड टेक आउट ऑल दिस क्लिप्स ऑफ माय, आपके पास चैनल पे है, जब मैं ट्रैवल करता था. कौन तकरार छिड़ल बा तो तकरार चली, भरपूर जवानी में तलवार चली. केजरीवाल जी, ये महफिल का मजा हम तरीका से ले, कहीं यहाँ मर्जी महादेव के चली. So this is what is Shiva's blessing. What you can see is all Lord Shiva's blessing and Modi's guarantee. You see, I think it's interesting how the BJP has the firepower. See, when I have so many MPs, MLAs, all of whom can target specific areas. Bhupender Yadav was targeting areas with a large Yadav population. You've got those going into... You see, the BJP is a machine.
That's the point. You know, I think today is proving, No, and but it's a Rajdeep, machine. the BJP's been a machine even before. Despite that, they couldn't win in Delhi. No. Look at कितने जोर से वो ठाक के लाके हंस रहे. They haven't had an opportunity to laugh like this in Delhi in a long time. No, Rahul. Machine तो 2015 में भी थी. Machine तो 2020 में भी थी. Rahul, Worked so hard in Delhi, so hard that they will at least make an example, a shining example of what BJP can do to the national capital. Actually, Yeah, they आपको will करना go पड़ेगा. out Ravi of the Kishan way. ji, Actually, they Rajat have Reddy has an important advanced- on a very point. advanced This is start, an on a very- opportunity for the BJP to show what they can do to Delhi. If you can turn around Delhi in the next 5 years, then the voters It will would be say a thank role you. model for the entire country. आप It's लोगों a ने जो MCD microcosm. में किया was not a role model. MCD was terribly run, whether now or earlier. You didn't make much of a difference. अभी मौका दिया है वोटर ने आपको एक बार फिर से. But now, after 27 years, and definitely Prime Minister Modi ji, par pura vishwas, everybody has, everybody, entire country, and he knows, they know, and उनका भी घर यहीं है. Definitely, किस तरह 27 साल बाद बीजेपी आए, they are never going to. I am telling you on bang on कहता हूँ, बीजेपी अब ये मौका नहीं छोड़ेगी. पूरी ताकत झोंक के इस कैपिटल को कैपिटल कैसे होना चाहिए वो बताएगी देश को. okay. You know, it's interesting. The core Purvanchal seat of Babarpur, Gopal Rai is leading by 25,000 votes. But it was the safest But seat. he's a It big dominated. leader. But then that's a Can we say thank you? Tell us 1 minute about Gopal Rai, Preeti, because Can we just when say I- thank you to Ravi Kishan? Ravi Kishan ji, thank you very much. मुझे लग रहा है कि आपका शारीरिक वेट थोड़ा कम हो गया between the last time I saw you on a boat in Gorakhpur. Milky. आप बहुत ज्यादा कैंपेनिंग कर रहे हैं. आपका शारीरिक Yeah, I राजनीतिक lost वजन lot of बढ़ weight. रहा है, शारीरिक वजन घट रहा है. अरे बहुत जोर से हंस रहे हैं भाई. And even Sana ka copy Milkipur, Milkipur, you should see Milkipur result. Yeah, also. but Milkipur, sir, the आप लोगों ने allegation which पूछा is ही being नहीं made है both in Milkipur Milkipur and Delhi, Milkipur allegations of serious allegations of voter suppression have been made by the Samajwadi Party, and Akhilesh has been making this for a while. In Delhi also the allegation is that there was no level playing field. आप बराबर की लड़ाई नहीं कर रहे थे. बीजेपी के पास पूरी सरकारी यंत्रणा अरे थी. 6 months back. 6 months back, the same चुनाव आयोग was on mountain, Himalaya पे था. आज वो मर गया. See, this is what when you win a Lok Sabha 42 seat when you win in UP. That time this चुनाव आयोग and everything was perfectly all flowery, all beautiful, la type, and suddenly the minute you come to know you're losing it, and then you start blaming. This is a very immature way of running politics, and kind of the legendary netas talking all this. I feel as an actor, as a new learning politician, I feel very sad. When you win, it's all beautiful, and when you're losing it, you start blaming straight away, you know. This is very sad. Look at this. अयोध्या में जब जीते थे वो जो जीते थे अवधेश प्रसाद, उनको ट्रॉफी की तरह राहुल जी और अखिलेश यादव जी लेके पार्लियामेंट में ट्रॉफी की तरह घूमते थे. And today, look at the result. Okay. Thank you so much, Rahul ji. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you very much for joining us, regaling us with your laughter.